39, and you have got the corresponding midpoints to be as 14.5, 24.5, 34.5, and the third example in which the class intervals are taken as 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, and you have got the answers to be as 14.5, 24.5, and 34.5. And now there will be a doubt asking the question that कि सर ये मिड पॉइंट वाला टर्म तो एकदम ही इजी था, तो भी सर आपने हम लोग को ये तीन अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स क्यों एक्सप्लेन किए? एग्जांपल नंबर 1 बेटा, it was of continuous type of data बेटा. Second example, it was of discrete data, and third example, it was of discrete data which has been converted into a continuous data. तो बेटा यहाँ से एक बात तो बेटा क्लियर हो गई, समझ में आ गया बेटा सब लोग को कि when we try to find a midpoint of a continuous data and when we try to find a midpoint of a discrete data, so midpoint of a continuous data and a discrete data, they are never the same. They are not the same. But when you try to find the midpoint of a discrete data which is converted into a continuous data, so in that case midpoint remains one or the same, and that you can see from example number 2 and example number 3. ये जो नॉलेज बेटा मैं तुम लोग को इम्पार्ट कर रहा हूँ, ये सब बेटा तुम लोग ध्यान में रखना, सम सॉल्व करने के टाइम बेटा ये सब काम में आने वाला है बेटा. All these things बेटा it is going to be helpful. चलो with this बेटा the term midpoint also gets over. Midpoint also gets over. And now starting with a new term which is called to be as width of a class. Width of a class. Width of the class which is also called to be as the size of the classroom, or it is called to be as the length of the classroom. बड़ा width बोलो, size बोलो, या तो फिर बड़ा उसे length of the class बोलो, it is considered to be as one or the same. But just by knowing the name, the purpose is not going to be solved. In the real sense, we should know what is the meaning of the term width of a class is. Width of a class is. Width of a class is defined to be as the difference between upper limit
difference between the upper limits of the consecutive class intervals. Difference between the upper limit of the consecutive class interval of the consecutive class interval. Now, when I'm using the word difference, difference means it is a subtraction. Difference means difference means subtraction. Difference means subtraction of the consecutive consecutive बोला बेटा consecutive means successive. Consecutive means successive. The difference between the upper limits of the consecutive class intervals is is called to be as the width of a class is called to be as the width of a class. And now again over your screen सब लोग ध्यान से चेक करते हो. I have taken the 3 examples. One for the continuous type of data. Second, it is for the discrete data. And third, continuous or a discrete type of data. Discrete type of data. It is being converted into our continuous data. मैंने एरो मार्क से वहां पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है. The difference between the difference between the upper limits, the difference between the upper limits of the consecutive class intervals, and in each of the case, you can see that the width remains one or the same. The width remains one or the same. Check it out for a continuous data, for our discrete data, and a discrete data which is converted into a continuous data. चलो बेटा यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सब लोग बड़ा रिप्लाई करो फटाफट के लिए. चलो very good. Maximum students they don't have any doubts. But I have a doubt over here. I have a doubt. And you people will try to answer that. Right on. मेरा क्वेश्चन सब लोग बड़ा सुनो कि in a specific type of data,
In our specific type of data, the width of a class always it remains same. Say the given sentence is option A true, option B false, option C partially true, and partially false, option D none of this. चलो भाई चलो, कितना टाइम लोगे आंसर लिखने? चल 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 जल्दी फटाफट कर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा हैव गिवन मी द आंसर ए बेटा। और यहाँ पे बेटा तुम लोग को सब लोग को बेटा जान के ये बहुत खुशी होगी बेटा कि तुम लोग ने सब लोग ने मिलके जो मुझे ये आंसर दिया ना बेटा, सब लोग ने मिलके जो आंसर दिया ना बेटा, वो एकदम ही रॉन्ग है बेटा। ये एकदम ही रॉन्ग है बेटा। इट इज द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग बोला। क्या बोला? रॉन्ग बोला। क्योंकि तुम लोग ने बड़ा उतना ही समझा जितना मैंने तुम लोग को बड़ा एक्सप्लेन किया। तुम लोग को सब लोग को मैंने इज्जत से पूछा था बड़ा, एनी डाउट्स पूछा था कि नहीं बड़ा, एनी डाउट्स? तो सब लोग ने बड़ा मुझे यहाँ पे मना कर दिया बड़ा। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दिया बड़ा और तुम लोग ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया बड़ा। और उसमें तुम लोग की भी बड़ा कोई गलती नहीं है बड़ा, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड तक बेटा तुम लोग ने सिर्फ वही टाइप के सम्स बड़ा सॉल्व किए हैं जिसमें तुम्हें width of a class and the size of the class बड़ा तुम्हें हमेशा बड़ा सेम मिला हुआ है। बट भाई ये 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड नहीं है। सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन। एंड इन सीए फाउंडेशन बड़ा possibilities are there bro, कि you may come across bro, with such type of situation bro, where the width of the class it may not be the same. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट It may तैयारी का not be the साथी। same. अब सब लोग बड़ा अपना नाक खोल के सुनो। Suppose if the class interval bro, of the given data is given to be as bro, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 80, 80 to 100, 100 to 110, 110 to 120, and 120 to 150। और ऐसे सिचुएशन में अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, find the median of the data,
फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो भाई यहाँ पे तो सब लोग अपनी चाणक्य बुद्धि यहाँ पे प्रकट कर देते कि नहीं बड़ा? सब लोग का बड़ा प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाता। Some is wrong. There is printing mistake. Savio, डबल, कुंज, सोचते ना बड़ा सब लोग ऐसा। आंसर दो, रिप्लाई करो मुझे फटाफट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता मैडम, हाँ, तो तुम लोग तो अपनी चाणक्य बुद्धि यहाँ पे एक्टिवेट कर देते मैडम। हाँ, कोई सम रॉन्ग नहीं है मैडम, सम बराबर ही है। और यहाँ पे तुम लोग ने देखा होगा मैडम कि थ्रू आउट द गिवन डेटा मैडम विड्थ जो है वो सेम नहीं था मैडम। विड्थ जो है बेटा वो सेम नहीं था। ये पूरे एग्जाम्पल में बेटा विड्थ कभी 10 था, विड्थ कभी बेटा 20 था, विड्थ कभी बेटा 30 भी था। नोट किया था बेटा तुम लोग ने? नोट किया था, नोट किया था, नोट किया था तुम लोग ने? तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब मैंने क्वेश्चन तुम्हें पूछा था बेटा कि इन स्पेसिफिक डेटा बेटा the width of a given data always it remains same बेटा। तो उसका जो आंसर है बेटा, इसका जो आंसर है बेटा पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स बेटा। बिकॉज बिकॉज जो वेट है बेटा, वेट जो है बेटा, जो साइज है बेटा और जो क्लास है बेटा, इट मे और मे नॉट बी द सेम बेटा। इट मे और मे नॉट बी द सेम बेटा। इट मे और may not be the same। इसका मतलब with respect to this the correct answer it goes to option C option C ऑप्शन सी। और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना तुम लोग को, इट इज वन ऑफ द मोस्ट important MCQ which can be asked in the exam। One of the most important MCQ which can be asked in the exam। ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये तुम लोग बड़ा कहीं पे नोट करते रहना बड़ो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो तुम्हें उसका आंसर देना आना चाहिए बड़ो। इज दैट क्लियर बड़ो? इज दैट क्लियर बड़ो? चलिए रिप्लाई करो फटाफट। नोट कर रहे हो बड़ा सब लोग? ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ा, नोट कर रहे हो ना सब लोग बड़ा सब? एंड नाउ बड़ा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टर्म बड़ा, let me proceed with the next part। This term width is over। We'll proceed now with the next term, which is called to be as frequency and frequency distribution। अभय शंकर, the question is for a specific data
for our specific data, the weight of the data, the weight of data, it always remains the same. And your options are A, true, B, false, C, partially true and partially false, D, none of this. लिख लिया अभी शंकर? चलो next. We'll start with the next term, which is called to be as frequency and frequency distribution. Frequency and frequency distribution. If you remember, in the last lecture only, we have studied about the term frequency. Frequency. मैंने explain किया था तुम लोग को ये term. And while explaining, but I have mentioned that the number of times, the observation which is getting repeated, number of times, the observation which is getting repeated is called to be as frequency. The number of times the observation which is getting repeated is called to be as frequency. And when all the values of a variable and all the values of a variate are represented along with the frequency, along with the frequency, then it is called to be as then it is called to be as frequency distribution. It is called to be as frequency distribution. And when such type of frequency distribution, when they are being represented along with the table, along with the table, then it is called to be as then it is called to be as frequency distribution table. It is called to be as frequency distribution table. तो बड़ा देखो बड़ा यहाँ पे स्लाइड चेंज किया हुआ है बड़ा. You can see the examples of frequency distribution table. These are all the tables which are being called to be as frequency distribution table. Because in this table, the values of a variate, the values of a variate, or the values of all the class intervals, they are being represented along with their frequency, along with their frequency. Therefore, it is being called to be as therefore it is being called to be as frequency distribution table. They are being called to be as frequency distribution table. And moving towards our last part, which is being called to be as the types of frequency. Types of frequency. That types of frequency we'll be studying in our next lecture. We'll stop here and we'll continue all these things in our next lecture. Till then, everyone take care, stay home and stay safe. और जितना जितना मैंने पढ़ा है वो सब तुम लोग को रिवाइज करना है सब. नेक्स्ट लेक्चर में आगे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा मैं. इज दैट क्लियर? Is that clear?
कोई डाउट पूछना है मैडम? कोई डाउट पूछना है मैडम? चलो देन, बाय बाय। हाँ कृष्णा पूछ। धवल, धवल क्या डाउट पूछना है मैडम? यस रितेश, थैंक यू मैडम। ओके चलो, बाय बाय मैडम।